few things which we have seen in the past few years that are being repeated, the themes, the micro themes that get repeated, and we have done a compilation of all those themes here in front of you. Questions किस तरह से आते हैं prelims में related to these topics is what we will show you in these flash notes, and you'll able to figure out कि इन सारे topics को हमें पढ़ना कैसे है. There is a did you know column, which is बीच बीच में पढ़ते पढ़ते gets interesting कि you can check your knowledge कि आपको पता है कि नहीं इनके बारे में. The moment you divide them under the micro themes, it becomes easier for you to understand कि किस topic में से कितने questions आ रहे हैं और कितनी frequency पे आ रहे हैं. I started my full-fledged preparation after I joined the Ultimate Assessment Program at Civilsdaily. Civilsdaily. There is a 12-month strategy which I have done on Civilsdaily platform only. I reached out to the Civilsdaily team. Civilsdaily. Current affairs में Civilsdaily. Civilsdaily. A mentorship program of Civilsdaily, and that did help me a lot. Hello everyone. As it has been stated by Srijay sir, that environment holds a very important role in our prelims examination. Most of you are aware that prelims के लिए there are the 4 static subjects that one needs to do very nicely to ensure that you are coming near to the cutoff. And once you are done with those static subjects, there are some portions in your current affairs subject which needs to be done nicely and holistically, so that वो जो और 10-15 marks का जो jump आपको लेना है to make sure that you clear the cutoff. I think these are the flash notes which are extremely going to be helpful for you, especially in the case of a subject like environment, जहाँ पे what should I say, the cost effectiveness of the subject becomes very low at sometimes, क्योंकि आपको कभी-कभी समझ नहीं आता कि क्या पढ़ें, and you study a lot of things और उसमें से आधी चीजें आपके एग्जाम में आती हैं. But there are few things which we have seen in the past few years that are being repeated, the themes, the micro themes that get repeated, and we have done a compilation of all those themes here in front of you. So I want you all to go through them very nicely, because beyond this, I believe कि इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है. इसके beyond the cost effective is poor, but this is something which will holistically cover your protected areas, which will involve your national parks and wildlife sanctuaries. And we have seen that questions आते हैं यहाँ से. So once you are done with your static portions, and once you have made sure that those are the subjects जिसमें आपकी अब गलती नहीं होगी, let's move to the environment section, where we will make sure कि यहाँ पे अगर इन areas से हमारे questions आ रहे हैं, so we tackle them, nicely. So first, if we see the protected areas of India, so briefly, you can see that it has been very well mentioned here कि यहाँ पे protected areas of India में क्या-क्या आपका include हो सकता है. Where it could be your national parks, it could be your wildlife sanctuaries, it could be your biosphere reserves and protected forests, conservation and community reserves. अब इन पांचों के बारे में हमें अच्छे से मालूम होना चाहिए. हमें पता होना चाहिए कि इन पांचों में डिफरेंस क्या है and किस किस एरिया में कौन से हैं. Now, there are a lot of wildlife sanctuaries in the country, as you have seen mentioned here that it has 567 wildlife, and you don't have to remember each and every wildlife sanctuary. Of course that's not possible to do it, but questions किस तरह से आते हैं prelims में related to these topics is what we will show you in these flash notes, and you'll able to figure out कि इन सारे topics को हमें पढ़ना कैसे है. Okay. So moving ahead, we can see that पहले हमने eco-sensitive zones की बात की है. The theory, the content which you need to understand these topics briefly, जिससे आपका conceptual clarity रहे, is everything is there. कि eco-sensitive zone क्या है. Now you also know that eco-sensitive zone को लेके there has been hustle in the news, and people want कि आप clearly define करिए that what eco-sensitive zones are and things like that. So here you can see कि eco-sensitive zones के बारे में clearly यहाँ पे mention है क्या वहाँ prohibited है, क्या regulated होता है, ये सारी चीजें. So when we start with the protected area वाला thing, we always divide it into micro themes. This has been a popular thing which we do here at Civilsdaily. आप हर एक बड़े पहले तो आप टॉपिक्स को डिवाइड करते हो, बड़े टॉपिक्स को, एंड देन वी मेक श्योर कि उन बड़े टॉपिक्स के अंदर जो हमारे छोटे छोटे टॉपिक्स आ रहे हैं, जिन पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, हम उनको डिवाइड करते चलें. So if you see microtheme 1, it is on the biosphere reserves in India.
And if you can see कि 2019, 2014 and 2013 में बायोस्फीयर रिजर्व्स पे क्वेश्चंस हैं. Now you can see कि यहाँ पे एक तो उन्होंने directly, this is a factual questions. Factual questions, usually factual questions comes from biosphere reserve. Either they'll ask कि where is this biosphere reserve, और they will ask you कि कौन सा लेक है जो इस बायो रिजर्व के पास है, कौन सा हिल्स है. So you have to understand कि bio reserves के context में what we need is now this. पहले तो हम ये समझेंगे कि biosphere reserves होते क्या हैं and where are those biosphere reserves. Now in the case of biosphere reserves, it's easy to remember them क्योंकि they are less in number. तो इस मैप के थ्रू यू कैन सी दैट ब्यूटीफुली यहाँ पे अच्छे से, जिससे आपको ज्योग्राफी भी थोड़ी क्लियर हो जाए दिमाग में, where you can roughly also remember where those biosphere reserves are. You can learn them and keep revising them with your maps. इसके अलावा whatever theory और whatever conceptual clarity आपको biosphere reserve से related चाहिए has been mentioned here. चाहे वो structure को लेके हो, चाहे उनकी एक overview हो, या पूरी एक लिस्ट हो जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, इंटरनेशनल स्टेटस क्या है बायोस्फीयर रिजर्व्स का? देयर इज दिस man and biosphere program है. Now not all our biosphere reserves are under this MAB program, right? Sorry, MAB program. Now what are those biosphere reserves which are under the MAB program? आपसे इस तरह से भी prelims में पूछ सकते हैं ना. So make sure that you know those MAB bioreserves also, which has again been mentioned here. Okay. So then moving ahead to the next microtheme, which is our national parks in India. अब नेशनल पार्क्स के कॉन्टेक्स्ट में इफ यू सी देयर हैज बीन रीसेंट क्वेश्चंस, जैसे 2020 में भी पूछा है, 2020 में 2 क्वेश्चंस आए हैं इस पे, सॉरी एक्चुअली 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं यहाँ पे. तो यू सी कि किसी किसी साल में किसी एक माइक्रो थीम का हो सकता है कि आपको क्वेश्चंस बिल्कुल ना आए, हो सकता है एक क्वेश्चन आए, और हो सकता है कि 3-4 पूछ दें. नाउ दैट इज व्हाई importance of doing PYQs and understanding the micro themes that come out of it is important. Now, if we move ahead to the second micro theme, which is our national parks in India, you can see कि यहाँ पे अभी तक जो भी आपसे national park related question पूछा गया है, this has been mentioned here. आप यहाँ से figure out कर सकते हो कि कौन कौन से national parks पे ज्यादा importance दी जा रही है, कौन कौन से ऐसे state हैं जिसके national parks पे ज्यादा importance दी जा रही है, या कोई नया इंट्रोडक्शन है. अगर किसी नेशनल पार्क में देयर हैज बीन समथिंग गोइंग ऑन रिसेंटली इन द न्यूज, यू कैन फिगर इट आउट. उस साल आप देखोगे कि वो नेशनल पार्क न्यूज में रहा होगा, या समथिंग रिलेटेड टू दैट नेशनल पार्क मस्ट हैव बीन न्यूज, एंड दैट इज व्हाई दे वुड हैव आस्क्ड हियर. सो अगेन फॉर द थ्योरी पार्ट, इट हैज बीन वेरी क्लियरली डन हियर कि नेशनल पार्क्स पे आपको बताया है कि आपको किन किन चीजों पे फोकस करना है. सब चीज एकदम डिटेल में नहीं पढ़ना है. इट विल गेट टू फैक्चुअल एंड टू डिफिकल्ट ओवर टाइम टू रिमेंबर, टू मेमोराइज इन द फर्स्ट प्लेस एंड देन रिमेंबर इन द सेकंड प्लेस. तो ज्योग्राफिकल लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, रिवर्स और इम्पोर्टेंट स्पीशीज. नाउ इसमें भी बी वेरी स्मार्ट अबाउट इट, क्योंकि कई सारे जगहों पे बहुत सारी स्पीशीज का ओवरलैप होता है. तो रिमेंबर दो स्पीशीज जो उस एरिया में यूनिक है ना. तो you can see कि यहाँ पे there has been mentioned कि क्या what are national parks and what is the process of declaring something as a protected area. Then there is a did you know column, which is बीच बीच में पढ़ते पढ़ते gets interesting कि you can check your knowledge कि आपको पता है कि नहीं इनके बारे में. Just go read about it. Do you remember the classmates copy which we used to have in our school, and वहाँ पे पीछे में they used to do this did you know section. It was very interesting. I used to find it very interesting. So it's kind of like that, you can just check whatever you know and see कि ये कितना important है हमारे लिए ये सारी चीजें जानना. And then you have this nicely done map where state wise it has been very beautifully divided कि कहाँ पे कौन सा national park है. Now I understand कि in the first place ये देख के बहुत overwhelming लग सकता है, and you feel कि ये सारी चीजें याद नहीं की जा सकती हैं, which I agree कि not everything can be remembered, but if you visit this map 3, 4, 5 times, I think almost बहुत सारी जगह ऐसी हैं which you people already know. आपने स्कूल में पढ़ा है, आप न्यूज के थ्रू जानते हो, most of you would have gone and visited these places. तो कुछ चीजें तो आपको ऐसे भी याद रहेंगी, कुछ चीजें यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज के साथ भी ओवरलैप करेंगी. तो most of the national parks here is something which you already know about.
The important part for you to do here is remember those which you don't, and especially highlight those national parks which उस साल में न्यूज में रहे हैं. And when with a holistic coverage like this, it becomes easier for you to mark those ones which are, currently in the news. Moving ahead, there is this brief of national parks which has been very well summarized. You can see river के बारे में, flora and fauna, और कोई भी और specific detail which you need to know from the point of view of prelims has been mentioned here. Okay. Then moving ahead, हमारा microtheme 3, which is the wildlife sanctuaries in India. Again, going by the same pattern as to telling you कि पहले के questions क्या आए हैं, and then showing through the map कि wildlife sanctuaries क्या है हमारे country में, and then moving ahead with what are those wildlife sanctuaries, naming their location, their important rivers, flora, fauna, and any other specific details which we feel कि अगर अलग से कुछ पूछ दिया तो ये आपको आ जाना चाहिए, ये आपका हो जाना चाहिए. And then protected areas के अंदर the microtheme 4, which is tiger and elephant reserves in India. Highlighting again, I'm highlighting here the PYQs. Please topic wise PYQs को देखिए. If you start सिर्फ environment समझ के अगर आप PYQs देखिएगा, it gets very confusing at one point of time. The moment you divide them under the micro themes, it becomes easier for you to understand कि किस topic में से कितने questions आ रहे हैं और कितनी frequency पे आ रहे हैं. Okay, and then the tiger reserves of India. I think tiger reserves of India are again less in numbers and you can easily remember them. काफी सारे इसमें national parks के साथ overlap कर जाते हैं. So I would suggest कि tiger reserves of India को आप याद कर लीजिए, because initially I used to feel कि it's very difficult to do it, but you will realize that it's not so difficult compared to national parks and wildlife sanctuaries को remember करना, because tiger reserves में most of the things will overlap. And few factual details about tiger reserves, जैसे critical tiger habitat क्या है, tiger census क्या है. Now tiger census is something which is very important in the context of India, because India has done wonderful work to improve the population of tigers. अभी present tiger का कितना population है, कब ये tiger prevention का पूरा scheme start हुआ है, आपको year पता होना चाहिए. What are the things that are being done to remotely assess the population of tiger. So tiger projects related जो भी important information है, these are the things you should know. You cannot give an excuse कि हमें tiger report के बारे में नहीं मालूम, because इस area में हमारे country का contribution, the work that the people have done has been tremendously well. So you should know this, and that's why realizing how important it is for you to know it, we have mentioned it in the flash notes also. And moving ahead with the tiger. Now, Ramsar Convention, Wetlands, Montreux Records, ये सारी चीजें जो हैं ये 2022 में they have asked prelims में direct questions from here. 2023 के mains के paper में they have asked a question on Ramsar sites. हर साल, if not every year, then at least every alternate year a new wetland gets added. कुछ 3-4 wetland हमेशा add होते रहते हैं. तो it becomes important for you to know what Ramsar sites are and why, how things have कैसे Ramsar site का come about हुआ है, and what are the criteria that you need to call that the wetland qualifies to come under the Ramsar sites. Okay, then यहाँ पे Ramsar sites mentioned है. As of July 2025, there are 91 Ramsar sites in our country. I would suggest कि इसमें से जो आपको याद रह सकता है याद कर लीजिए, क्योंकि कुछ आसान होते हैं याद करना. Some of them I can understand might get very difficult, so at least do this task of remembering those wetlands which have been recently added in the Ramsar list. And you can clearly यहाँ पे सारे states के साथ अलग करके बिल्कुल यहाँ दे रखा है. You can see कितने number of sites हैं. अगर डायरेक्टली नहीं पूछेंगे तो ये भी पूछ सकते हैं कि हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर वेटलैंड किस स्टेट में है. तो यू डोंट हैव टू रीड एनीवेयर एल्स फ्रॉम फॉर दैट, एवरीथिंग इज मेंशन्ड हियर. ओके, एंड देन इफ यू फॉरवर्ड वी हैव द एलिफेंट रिजर्व्स. ओके, देन अगेन द एलिफेंट रिजर्व्स का वैल्यू कहाँ जाता है, व्हाई एलिफेंट रिजर्व्स आर इन द न्यूज. एक तो एलिफेंट कॉरिडोर्स पे काम हो रहा है, दूसरा द रिसेंट एलिफेंट को लेके
वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट न्यूज में रहता है, तो फॉर दैट पर्पस एलिफेंट रिजर्व्स का अगेन वैल्यू बढ़ जाता है. सो यू कैन सी हियर, यहाँ पे कैसे नंबरिंग है, कितने और किस जगह पे कैसी नंबरिंग है एलिफेंट्स की, दे हैव मेंशन्ड हियर वेरी नाइसली. एंड देन आई थिंक इसके अलावा वट एवर यू नीड फॉर एलिफेंट रिजर्व फॉर यू टू कवर इज कि वो कौन से स्टेट में है, कि वाटर बॉडीज क्या है, टेरेन क्या है वहाँ का, फ्लोरा एंड फौना क्या है. आई थिंक दिस मच इज वेरी important and also sufficient for you to know regarding what elephant reserves are and how many of them are there in our country. Okay, so this was something which is covering your protected areas wala topic. I don't think iske beyond anything you will do is going to cost you a lot of hard work. यहाँ पे आपकी half of your work has been done for you. आप अभी गूगल पे जाओगे, you will try to update. एक तो उनको अपडेट करते रहना है, is a challenging task. We have already given you the updated data, and with everything here, any factual detail that you need to understand about protected area is here in this document itself.